Good morning, everyone. So today we start a very important topic, which is called collision. So, what do you mean by collision? Collision means impact. Means in very simple language, if you say दो ऑब्जेक्ट का बीच में जो धक्का लगता है या टकरार होता है, it's called collision. So ये जो धक्का लगना या टक्कर या impact होना, this is basically three types. One is called elastic collision, one is called inelastic collision, another one is called partially elastic collision. So the first one is elastic collision. The first one is elastic collision. कहीं कहीं पे तुम इसको perfectly elastic collision भी देखोगे. This one is called the elastic collision. कहीं कहीं पे तुम इसे perfectly elastic collision भी देखोगे. The second one is inelastic collision. तुम कहीं कहीं पे इसको perfectly inelastic collision देखोगे. और the third one is partially elastic collision. So these are the three type of collision. Acha, most important part for this collision is that during all type of collision, momentum remain constant. That is very, very important. During all type of collision, remember, momentum remain constant or conserved, but only in elastic collision, means perfectly elastic collision, your kinetic energy is remain conserved. In other one, kinetic energy is not remain conserved. So we can see one by one. First, elastic collision. So suppose we have two particles, mass m1 moving with velocity u1 and mass m2 moving with velocity u2. During collision and after collision. So we can say that part is before collision, before, and that part we can say after. So this one is the before collision, this one is the after collision, and that is the during collision. That during collision, the time is very, very small, or time span is very, very small. So this part is the before collision, this part is the after collision. Number one, two important point. Number one, total momentum remain conserved. What do you mean by total momentum remain conserved? M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2, and if you want you can use the vector sign also, because momentum is a vector quantity. And the second one is total energy. Total energy here is especially the kinetic energy is remain constant or conserved. What do you mean by that total energy is remain constant and conserved? It means that no exchange of energy during collision. It means that no exchange of energy during collision in terms of heat, in terms of sound, in terms of shape of the deformation of the shape. That means जब collision हुआ, collision के after collision दो गाड़ी में धक्का लगा, अगर if it is a elastic collision, तो कोई किसी में डेंट नहीं पड़ेगा, कोई साउंड नहीं होगा, कोई हीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस खाली आया बैक कर दिया. Okay, so which is in practical impossible. So for elastic collision, total energy, total kinetic energy remain conserved or constant. So half m1 u1 square, half m2 u2 square, half m1 v1 square. Is it okay, everyone?
Hello, Yes, sir. everyone. You understand this? Up to this, okay? To all of you, Ananya. Yes, sir. Okay. So this is called the elastic collision. Now, if we write inelastic collision, so in elastic collision, what happened in inelastic collision? First of all, what happened in inelastic collision? First of all, after collision, both are stick together. So this is the best way to identify that which type of collision it is. If after collision they are just stick together, that means it's an inelastic collision. So m1 plus m2, and the first thing we know, total momentum always remain conserved. Total momentum always remain conserved. So again we can write m1 u1 m2 u2 equals to m1 plus m2 into v. So basically from that we get a relation, which this relation is very, very important. Basically from that we get a relation. That relation is very, very important. The second one is that total energy is not conserved. I repeat, total kinetic energy is not conserved. That means half m1 u1 square, half m2 u2 square, not equals to, means there is a loss, half m1 plus m2 v square. That means loss. What do you mean by loss? ये जो एनर्जी है इसका वैल्यू कम होगा और ये जो एनर्जी है इसका वैल्यू ज्यादा होगा. मतलब इसका कम वैल्यू, इसका ज्यादा. अगर ये 10 जूल है तो ये 8 जूल, 7 जूल, लाइक दिस. So total energy is not constant, conserved. That means energy loss during the collision, energy loss during the collision in terms of heat, sound, deformation, etc. Everyone, is it okay? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Everyone, I want to know from everyone, is it okay? You all understand this? No Yes, confusion? Yes, sir. Okay. So now partially elastic. So actually see the partially elastic is the actual example in our daily life, because so many collision and all going on, like कार के साथ कार का धक्का लगा, साइकिल के साथ बाइक का धक्का लग गया, इंसान के साथ इंसान का धक्का लग गया. So these all are the collision. So m1 v1, m2 v2. So first of all, always as usual, always total momentum remain constant or conserved. So m1 v1 plus m2 v2, but total energy is not constant. So energy loss during the collision, so half m1 v1 square, half m2 v2 square, not equal means loss, not equal means loss in terms of heat, in terms of sound, in terms of deformation of shape, etc., etc. Is it okay, everyone? Yes, sir. yes, sir. Okay, so now sometime because I see sometime in some school they give 5 marks question and they say explain collision, means how many types of collision. So collision is basically 3 types: elastic collision, inelastic collision, partially elastic collision, and then you have to draw each figure and then explain all this, then you get this one. Although uh, इट्स अ वेरी रेयर क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है
कि वो पूछ दिया 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कॉलिजन. हाँ, तो in elastic collision, what do you mean by elastic collision? So in elastic collision, total momentum remain constant, and m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2, and total energy remain constant or conserve only. So that means energy conserve is the parameter to understand that whether the collision is elastic or not elastic, because only in elastic collision energies remain constant. Otherwise, in all collision, momentum remain constant. So the only parameter to understand that whether the collision is elastic or not, the only parameter is to find out the energy is conserved or not. If the energy is conserved before energy is equals to after energy, then you can say the collision is elastic, otherwise not. Now I want to prove you one question which is very, very important. The question is that in inelastic collision, prove that energy loss during the collision. If you want, you can write the question also. In inelastic collision, energy loss during the collision. So suppose we have one particle of mass m1 moving with velocity u1 is u, another particle mass m2 at rest. So this one is at rest and this one is moving with some velocity, and then they collide. So after collision, as it is inelastic collision, so they stick together and moving with velocity v. Guys, is it okay? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So now from conservation of momentum, from conservation of momentum, m1u plus 0, why 0? Because u2 is 0 equals to m1 plus m2 into v. So v is m1 plus m2 into u. Is it okay? Yes, sir. So kinetic energy initial, what you can say, this is half m1 u square before collision, and after collision kinetic energy final half m1 plus m2 v square, which we can write half m1 plus m2 m1 by m1 plus m2 into u whole square. So what we get, half this m1 plus m2, 1 plus 1 cancel, m1 square by m1 plus m2 square. So after that, if we write kinetic energy initial by kinetic energy final, we have half m1 u square upon half m1 square u square by m1 plus m2. Now it is clearly visible. Half cancel, u square cancel, 1 m cancel, and it will come the upper form. So what we have, m1 plus m2 by m1, which is 1 plus m2 by m1. Is it okay? Yes, sir. So now tell me on that basis, so what do you mean by that? Your net
net value increase or decrease? Sir, increase. Decrease. Matlab 1 plus something, so greater than 1, so you can say kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. Is it okay, everyone? Yes, sir. So next important topic is coefficient of restitution. Next important topic is coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Sir, conservation So- movement একটা ডাউট আছে হ্যাঁ বলো। স্যার একটা ব্লক নাও না একটা ওয়াল কোশ্চেন না না কোয়েশ্চেন না থিওরিটিক্যাল বল। একটা ওয়াল দাঁড়া এটাকে আমি অফ করে দিই। নেক্সট ইজ কোফিশিয়েন্ট অফ রেস্টিটিউশন। কোফিশিয়েন্ট অফ restitution. Coefficient of restitution, very very important, represented by the symbol E. What is the definition? The definition of E is relative velocity of separation after collision. Relative velocity of separation after collision by relative velocity of separation before collision. Is it okay, everyone? Hello. yes sir Yes, sir. So suppose you have initial velocity m1 moving with initial mass m1 moving with velocity u1 as their velocity. So if you want, you can put it vector also. And what happened to most of in most of big book, you don't see they give the arrow sign, but according to me, if you give the arrow sign, so then it will be more precise in the sense of if they change the direction, then it will be স্যার helpful. Okay, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম কি স্যার আমি তো মালদায় আছি স্যার স্যার তুমি বলছিলেন না স্যার আমের গাছের চারা নিবে হ্যাঁ 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 স্যার স্যার কোন আম স্যার just 1 minute. Okay, so u1 is the initial velocity, v1 u2 is the u1 and u2 are the initial velocity before collision, and v1 and v2 are the final velocity after collision. And if you represent them by arrow, then it will be more perfect. So then you are not confused, never you confused. So see, suppose you have m1 m2 u1 u2 before collision, and after collision m1 v1 m2 v2. It's better if you show the arrow also. Now to collide them, u1 must be greater than u2. Is it okay or not? Tell me. If they are in the same direction. yes sir yes If they are in the opposite direction, then to no problem. But if they are in the same direction, so u1 must be greater than u2. And after collision, because of the separation, who is greater, v1 or v2? V2. v2. So what do you mean by E? Dekho, relative velocity of separation after collision. So between these two, so v2 minus v1, and relative velocity of separation before collision. Before में बड़ा कौन है? u1. You understand what I want to say? yes sir इसी को ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ऊपर में मॉड नीचे में मॉड ले लेता है, ताकि हमेशा अगर तुम गलती से u1 और u2 को उल्टा लिख दिया, u2 माइनस u1, तो यू गेट द सेम आंसर. तो हमें ऐसा सोचना ही नहीं है, हमें एकदम दिमाग में रखना है यही. अच्छा, इफ दे आर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes sir उल्टा डायरेक्शन से आने लगे तो यू कैन, ये वाला को अगर प्लस लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है, yes sir इज इट ओके? अच्छा, अब देखो, मेरे पास 3 केस था.
अगर E is equals to 1, it's called elastic. एक्चुअली इसको इलास्टिक नहीं बोला जाता, परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है, लेकिन तुम लोग का जितना बुक है उसमें इलास्टिक लिखा है, परफेक्ट इलास्टिक नहीं लिखा है. अगर E equals to 0 तो इन इलास्टिक. तो बेसिकली ना पहला वाला एग्जिस्ट करता है ना दूसरा वाला एग्जिस्ट करता है. एंड इन प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में होता है, ना ये 0 होता है ना ये 1 होता है. इट्स ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1. सो इट इज कॉल्ड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So after that, the next part, next theoretical part. मैं पहले theoretical part करा देता हूँ, फिर मैं numerical part कराऊंगा. It will help you. Next question is 5 marks coming soon question. Next question is 5 marks. Next question is 5 marks coming soon question, and in this question examiner ask you 2 type of question. तो listen properly. बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा तो मैं मुंह पे बोल रहा हूँ. क्वेश्चन ऐसा देगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक कॉलिजन. ओके, इलास्टिक कॉलिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोलेगा? टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2. ठीक है. After collision their velocities are v1 and v2. In case of elastic collision, find the express the velocity v1 and v2 in terms of u1 and u2. You understand? माने u1 u2 दिया हुआ है, v1 v2 के फॉर्मेट में आंसर निकालो. Is it okay everyone? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन देता है कभी कभी सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन देता है, कभी कभी सिर्फ दूसरा वाला देता है, कभी कभी दोनों को मिक्स कर देता है कि प्रूव दैट इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुंदर करके फिगर लिखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. m1 u1 m2 u2 during collision, m1 v1 m2 v2. क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एकदम अच्छा से लिखना है. इसको बिफोर कॉलिजन, इसको इसको बिफोर कॉलिजन, इसको आफ्टर कॉलिजन. सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम conservation of momentum, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2. Is it okay? Equation number 1. Everyone, is it okay? Yes, sir. Can we write m1 u1 minus v1 m2 v2 minus u2? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. As elastic collision, energy, kinetic and total kinetic energy remain conserved. So half m1 u1 square, half m2 u2 square, half m1 v1 square. Can we write this?
Yes, sir. half m1 u1 square minus v1 square, half m2 v2 square minus u2 square, half cancel. Can we write this equation number 3? Yes, sir. So now dividing equation 3 by 2, m1 u1 square v1 square, m1 u1 minus v1, m2 v2 square u2 square, m2 v2 minus u2. So u1 minus v1, u1 square minus v1 square, what do you mean by that? What is the formula of u1 square minus v1 square? V1 plus Yes. V1 into u1 minus v1 plus u1 plus v2 na? mm-hmm. So this V1 cancel. to. So what? u1 minus v1 हाँ, sir. into u1 plus v1. So u1 plus v1, and from here v2 plus u2. Can we write? Yes, sir. Yes, sir. From this, can we arrange u1 minus u2 is equals to v2 minus v1? Can we arrange? Yes, sir. So can we write coefficient of restitution v2 minus v1 by u1 minus u2 equals to 1? Oh, yes, sir. Yes. So we prove it. They are Yes, equal, sir. so their ratio is 1. Yes, sir. Is it okay? तो मुझे यहां तक लाने के बाद इसको ये दिखाना है, then it is we prove that the coefficient of restitution is 1. Is it okay? Everyone, Yes, is it okay? अब हमें Yes, क्या sir. करना है? अब हमें क्या करना है? देखो, जब मुझे इक्वेशन चाहिए, so we can do anything. हम क्या कर सकते हैं? ये जो इक्वेशन है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, और यहां से देखो मैं v2 निकाल सकता हूं, दैट इज u1 माइनस u2 प्लस v1. कैन वी राइट दिस? yes, sir. Can we write this? Can we put this in equation number 1? Putting the value in equation 1. So if we put in equation 1, what we have, m1 u1, m2 u2, m1 v1 plus m2. Instead of v2, we can write u1 minus u2 plus v1. Is it okay? Yes, sir. Now you have to find out v1. So you have m1 v1, you have m2 v1. So can we write v1 m1 plus m2? Can we write? Yes. Is it okay? m1 v1, m2 v1. So v1 m1 plus m2. Is it okay? Hello, is it okay? Yes, sir. So rest we move on to that side. So you have m1 u1, you m1 u1, you have m2 u1. इसको मैंने इस साइड में रखा है, इसको इधर ले जाएगा तो प्लस होगा ना माइनस होगा? इस m1 u1 को इस साइड में ले जाएगा तो प्लस होगा ना माइनस होगा? Minus. तो what we can write, m1 minus m2 u1. Can we write? इसको मैंने एक साइड में रखा, इसको उल्टा साइड में ले आया. ठीक है? Yes, sir. एंड m2 u2 यहाँ पे है m2 माइनस u2, इधर आएगा तो क्या होगा? 2 M2. 2m2 u2. So v1 is what? m1 minus m2, m1 plus m2, u1 plus 2m2 by. Is it okay? Yes, sir.
instead of V2, if we put V1, what happened? This one, na? You understand what I want to say? Yes, sir. देखो V2 पुट किया तो V1 निकला, तो V1 पुट करेगा तो क्या निकलेगा? हेलो, V2. देखो V2 पे पुट किया तो V1 निकला, अगर V1 पे पुट करते तो क्या निकलता? V2। Yes, sir. तो V2 का वैल्यू देखो, याद करने के लिए अगर तुम्हें V1 मिल गया है, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, M2 माइनस M1, M1 प्लस M2, यहाँ पे U1 है तो U2, 2 M2 है तो M1, M1 प्लस M2 U1, याद रहेगा? ये फॉर्मूला को एकदम याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है? यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल। अब बोलोगे सर कैसे याद रखेगा? देखो मैं इसको बिना देख के तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, कैसे याद रखोगे। V1 याद रखना, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 U1। अब इसका दोनों का जोड़ हो जाएगा 2M2 बाई M1 प्लस M2 U2, ठीक लिखा ना? परफेक्ट, समझ में आया? हेलो, अब इसके बाद अगर एक आ गया तो दूसरा क्या होगा? इसका उल्टा, M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1, M1 plus M2 U1. You understand? Yes, sir. So this part is very, very important. If you want to remember, you can remember it just like this. V1 is equals to M1 minus M2 by M1 plus M2 U1 plus 2M2 by M1 plus M2 U2. देखो तुम लोगों को लग रहा होगा मैं इधर उधर से देख ही रहा हूं, मैं आंख बंद कर रहा हूं, तब तो मैं नहीं देख रहा हूं ना। देखो V1 equals to M1 minus M2 by M1 plus M2 U1 plus 2M2 by M1 plus M2 U2. हुआ? हेलो, Yes, sir. तो इन স্যার दैट वे, তুমি তো হ্যাঁ স্যার তোমার তো মুখস্থ সব, তুমি তো আমার পারবেই। কিছু মুখস্থ না। তুমি বাবু চোখটা বন্ধ করো। থ্যাংক ইউ। নাও কেস 1, if M1 is greater than M2, if M1 is greater than M2, what do you mean by that? M1 is very large mass with respect to M2. Like if you drive a truck, ठीक है, और गाना गा रहे हो, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे वो सड़क पे एक बटरफ्लाई आया, तो क्या तुम ब्रेक लगाओगे? नहीं सर, मार देंगे। क्या बटरफ्लाई उड़ जाएगा? तुम्हारा ब्रेक के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज उसका मास इतना कम है विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ द ट्रक, ठीक है? तो बटरफ्लाई तुमको कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन एक हाथी आ गया तो तुमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स अगर ज्यादा मास है तो उसका मोशन में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कम मास है तो हम लोग बोलते हैं हट भागो। हम लोग जब दौड़ रहे हैं तो आसपास में कितना वायरस है, कितना एयर पार्टिकल घूमता है, क्या हम लोग उसको देख के रुक जाते हैं कि बेचारा को धक्का लगेगा, मर जाएगा, उसका इमोशन क्या होगा? क्योंकि हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो M1 is greater than M2, जब M1 is greater than M2, that means we neglect M2 with respect to M1. तो ये क्या आया? M1 minus M2 by M1 plus M2, ये कितना आएगा? देखो M2 को हम हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, 2M2 by M1 plus M2 कितना होना चाहिए? देखो M2 is very less, तो something less by very large value is 0, है ना? फिर M2 minus M1 by M1 plus M2, देखो M2 is very less and M1 is very large, so -1 and 2M1 by M1 plus M2. M1 is very large value, so the answer is 2. Is it okay, everyone? You understand this part? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. So on that basis, can we say
if m1 is greater than m2, so in place of m1 we can write this, in place of this we write this. So v1 is what? Is u1, and v2 is minus u2 plus 2u1. Is it okay? Yes, sir. Everyone, you understand? Everyone understood? Hello? कोई तो कुछ बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू. केस 2. केस 2 में देखो क्या है, अगर उल्टा हो गया मतलब m1 इज लेस देन m2, तो ये वाला क्या होगा बोलो मुझे. ये चारों क्या क्या होगा? अनन्या बोलो ये क्या होगा? अनन्या, अनन्याय Yes, sir. এটা কত হবে বলো? Sir, 0. কি করে? এটা m2 গেটার, তো দুটো m2 আছে না? আচ্ছা 1. কি করে 1? এখানে উপরে প্লাস, মাইনাস নিচে প্লাস. কত হবে? -1. -1. অভিরূপ এটা কত হবে? স্যার কোনটা? এদিকে এটা সেকেন্ডেরটা. পাচ্ছি না, আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেন দেখতে পাচ্ছ না তুমি? স্যার তোমার ছবি দেখাচ্ছে, তোমাকে Sir, দেখাচ্ছে তোমার না। ভিডিও অফ। এটা কত আসবে? 0। এক থাপ্পড় মারবো। m2 greater than m1 না? M2 বড় না? হ্যাঁ, তো উপরে 2m2 নিচে m2 আছে। 2 হবে। হ্যাঁ। হুম। অঙ্কন এটা কত হবে? এটা কত হবে অঙ্কন? m2 minus m1, m1 plus m2। আরে ধরে নে না m1 is 0। এবার দেখ না কত হচ্ছে। হায় ভগবান, উঠায় নাও আমাকে। অঙ্কন স্যার 1 আমান কত বল? স্যার 0। তাহলে এখানে দেখ কি হয়ে যাবে, অনন্যা বল প্রথম ইকুয়েশনটা তাহলে কি হবে? দেখ -u1 প্লাস 2u2 আর পরেরটা কত হয়ে যাবে? u2 প্লাস 0 মানে u2। ঠিক আছে, বুঝেছিস? আর এর আরেকটা কেস আছে, দ্যাট ইজ দ্য কেস 3। সেখানে হচ্ছে যদি দুটো ইকুয়াল হয় তাহলে এখানে কত কত হবে বল? তাহলে এটা কত হবে? 0। এটা কত হবে? 1 1। এটা কত হবে? 0। এটা কত হবে? 1 না Very সরি good. 1। হ্যাঁ রে, 1ই হবে। তাহলে দেখ তোর যে এটা কত হয়ে যাচ্ছে u2 আর এটা কত হয়ে যাচ্ছে u1, বুঝতে পারলি? এই তিনখানা কেস থাকে, কখনো কখনো বলে এক্সপ্লেইন দ্য কেসেস অলসো ইফ m1 greater than m2, ইফ m2 greater than m1। আর এই হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্ট। এটা ছাড়া আরেকটা পার্ট আছে তোর ওই এর উপরে বেস করে অনেক কিছু আছে, তো আমি নিউমেরিক্যাল পোর্শন গুলো নেক্সট ক্লাসে করাবো। ঠিক আছে, আমি একটু বেশি ইচ্ছে করি আজকে একটু বেশি পড়াতে চাইছি না, কারণ আমি জানি না আমার একটু কেমন সাফোকেশন হচ্ছে। মেবি এসিটার জন্য, মেবি গরম লাগছে, শার্টটা পরেছি বলে খুব সাফোকেশন লাগছে। ঠিক আছে, ওকে স্যার।